আমি 1 নৱেম্বৰৰ পৰা আজি 17 দিন আমি হাতীৰ খোজত আহিছিলোঁ গুৱাহাটীলৈকে। অসমৰ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী, অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ সংকটকালৰ আপোচবিন সেনাপতি হীৰেণ গোহাঁই ডাঙৰীয়াকে প্ৰমুখ কৰি সকলো বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱীসকলে গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়া ৰাইজক সাক্ষী কৰি আমাক যি প্ৰেৰণা, আশীৰ্বাদ, সাহস দিছে, আজিৰ পৰা আমাৰ যাত্ৰা বাঘৰ গতি ল'ব, বাঘৰ গতিৰে শদিয়ালৈকে আগবাঢ়িব। আৰু আহি থকা সময়ত অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িক বিষবাষ্প সিঁচিব বিচৰা এই বিজেপি, RSS, ARDFৰ শিপা অসমৰ মাটিৰ পৰা উঘালিব নোৱাৰালৈকে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি ক্ষান্ত নহয়। আজি কেইবাটাও প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, আপুনি কৈছে যে অসমৰ যিসকল বুদ্ধিজীৱী আহিছে তেওঁলোকৰ ওচৰতে কৈছে যে ব্যক্তি স্বাৰ্থ পৰিহাৰ কৰি কংগ্ৰেছ আগবাঢ়িছে। আজি নিশ্চিতভাৱে এই যাত্ৰা কোনো ব্যক্তি স্বাৰ্থত নহয়, এই যাত্ৰা কংগ্ৰেছ দলৰ স্বাৰ্থত নহয়, অসমৰ জাতীয় স্বাৰ্থ কংগ্ৰেছে নৈতিক দায়িত্ব হিচাপে পালন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। অসমৰ ৰাজনীতিৰ সৰ্ববৃহৎ বিৰোধী শক্তি হিচাপে এয়া আমাৰ নৈতিক দায়িত্ব। জাতীয় সন্ধিখনৰ বিপদকালত স্বাধীনতা সংগ্ৰামতো কংগ্ৰেছে নেতৃত্ব দিছিল আৰু আজি দ্বিতীয় মহাভাৰতৰ যুদ্ধ এইসকল কৌৰৱৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছে নেতৃত্ব লৈছে। ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা চলি থকা সময়তে দেখা গৈছে যথেষ্টখিনি ৰাজনৈতিক পথ পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু এই ৰাজনৈতিক পথ পৰিৱৰ্তনৰ মাজতে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে বিজেপিত যোগদান কৰিব বিচাৰিছে। এতিয়া কোনো মানুহ বিজেপিলৈ স্বইচ্ছাই যোৱা নাই। CBI, EDৰ নিৰ্দেশত বহু মানুহে বিজেপিৰ গুৰিত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে। যিদিনাখন কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত অসমৰ ৰাইজ একত্ৰিত হ'ব, এইসকল নেতা পুনৰ বিজেপিক তেওঁলোকে ভিতৰত থাকি পেলাই ধ্বংস কৰিব। আপোনালোকে আৰম্ভ কৰা গোলোকগঞ্জৰ পৰাই এতিয়া দেখা গৈছে বিজেপিয়েও গাঁও সম্পৰ্ক অভিযান আৰম্ভ কৰিছে, ৰথ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া বিজেপিৰ দায়িত্ব হৈছে গুড গভৰ্নেন্স, চৰকাৰক সুদক্ষ নেতৃত্ব দিয়া, ভিজন ডকুমেণ্ট ৰূপায়ণ কৰা, গাড়ীবিলাকত কাপোৰ মেৰিয়াই ৰথ বনাই ৰাইজক দেখুৱাবৰ কাৰণে বিজেপিক ৰাইজে চৰকাৰ অনা নাছিল। গাড়ীবিলাকত কাপোৰ মেৰিয়াই পেলাই ৰথ বনাবৰ কাৰণে বিজেপিক ৰাইজে পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ দিয়া নাছিল। বিজেপিক দায়িত্ব দিছিলে অসম চুক্তি ৰূপায়ণ, বিজেপিক দায়িত্ব দিছিলে বানপানী গৰাখহনীয়া নিয়ন্ত্ৰণ, বিজেপিক দায়িত্ব দিছিলে চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি, 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ, গাড়ীত কাপোৰ মেৰিয়াই ৰথ দেখাবৰ কাৰণে নহয়। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যদি সম্ভৱ হয় AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ সৈতে অকণমান কথা পাতিম এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ মাজতে। যদি সম্ভৱ হয় জিতেন্দ্ৰ সিংজী আছে, মই অকণমান জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ। कल आपने क्लियर कर दिया था कि AIDF के साथ कांग्रेस का कोई नाता नहीं है, यूपीए में AIDF नहीं है। आज क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि देखा जाता है हर वक्त बीजेपी के साथ रहता है, ये आप लोगों का एलिगेशन है AIDF का खिलाफ। देखिए, आज तो मैं ये बोलूँगा, मैंने तो मेरा सारी बात क्लियर कर दी थी कल, और मेरा एलिगेशन नहीं है, वो जनता भी जानती है। वोट जब राष्ट्रपति के पड़ते हैं तो किसका वोट मिलता है इनको, जब वोट में पड़ते हैं राज्यसभा के तो किसका वोट मिलता है, किसने अंडर द टेबल किसने डीलिंग कर रखी है। लेकिन आज तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हीरेन गोहाई साहब और भी जो हमारे सीनियर लोग हैं, एडवोकेट्स हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, बड़े जो लोग हैं, दूसरी पार्टी के लोग हैं, वो सब इकट्ठे हुए हैं आसाम को बचाने के लिए, आसाम के कल्चर को, आसाम की भाषा को बचाने के लिए। जिस तरह से सिविल सर्विस एग्जाम में से आसाम को हटा दिया, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। ये इसकी आप सोचिए कि आसाम के अंदर आसामी भाषा ही नहीं है सिविल सर्विसेज में, तो ये बहुत दुख की बात है। तो आसाम के जोड़ने के लिए सब लोग आज जुड़े हैं। और एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है यहाँ पर। हाग्रामा महिलारी जो BPF के हैं, एक समय BPF आप लोगों का मतलब अलायंस पार्टी हुआ करता था, अभी हाग्रामा महिलारी ने बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए बहुत बड़ा उथप-थप लगा रहा है। क्या बोलना चाहेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, BPF जहाँ तक की बात है, वो महाजोट से, कांग्रेस महाजोट से बहुत दूर पहले ही चली जा चुकी है। आज से लगभग 1-1.5 साल पहले ही, चुनाव के तुरंत बाद वो महाजोट से बाहर हो गई थी। तो अब उसकी मर्जी है बीजेपी ज्वाइन करे, किसी को ज्वाइन करे। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है, जो मुझे ज्ञान है, कि बहुत सारे केसेस चल रहे हैं हग्रामा जी के ऊपर, तो CBI उनके पीछे पीछे घूमती रहती है। तो इसलिए उनने भी हार मान ली और बीजेपी के साथ जाकर बैठ गए। हाग्रामा महिलारी ने हार मान ली है बीजेपी के सामने? यस, बिल्कुल मान ली है। ED के सामने, बीजेपी के सामने। उनकी चिट्ठी पढ़ेंगे ना
ऐसी चिट्ठी है वो वही लिख सकता है जो हार मान लिया हो। कांग्रेस कभी हार नहीं मानेंगे। कांग्रेस कभी हार नहीं मानती है। हम है ना देश की आज़ादी के दिलाने वाले लोग हैं। हम इससे भी आज़ादी, मोदी से भी आज़ादी दिलवा देंगे।